أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students of 8th class, today on 16th April 2021, subject English. Our topic is compound words oblique phrases. We have to fill in the blanks with the compound words and fill in the blanks. We have to fill in the blanks with compound words and phrases. Dear students, kindly refer to 23 page number of your textbook. Fill in the blanks in the following sentences with appropriate compound words or phrases from the box below. From the box we have words and phrases: White House oblique White House, greenhouse oblique greenhouse, black box oblique black box, stronghold oblique stronghold, white collar oblique white collar. Some of these words are compound words and some are phrases. As you already know that compound words, it is a combination. Compound words are combination of two words, sometimes more than two words. And phrase, as you know, it is a group of words that contains a meaning but not the complete meaning. Let us take some examples of compound words. Toothbrush, it is a compound word. Blackboard, it is a compound word. And greenhouse, it is a compound word. And some examples of phrases like in a corner, on a table. And you should remember one thing, that in phrase it doesn't refer to any time. There is no time fixation in phrase. Let us take the first sentence. We live in a beautiful dash. We live in a beautiful dash. It is page number 23 of your textbook, Global Warming, 23 page number. We live in a beautiful greenhouse. We live in a beautiful greenhouse. Greenhouse. Greenhouse here means a house which is green. It is a phrase. It is part A of first and B part. My uncle has built a greenhouse. My uncle has built a greenhouse. Greenhouse. Greenhouse next to his house where he grows vegetables in winter. In first sentence, the greenhouse, it means the house which is green in color. And in sentence, and in the same sentence, or it is the part 2, it is B part. My uncle has built a greenhouse. My uncle has built a greenhouse. So here the greenhouse means in which we grow vegetables in winter season, because it keeps the seeds warm. Greenhouse keeps the seeds warm. So the greenhouse in second means a tent-shaped house in which we grow vegetables. And the second, it is A part. Most PhD only prefer white collar jobs. Most PhD only prefer white collar jobs. Here, white collar means professional job. White collar means professional job, which does not need physical labor. Which does not need physical labor. It is this job. It is done. The person is well suited, wears a tie, or we can say a decent job. They only prefer
decent jobs where they don't need any sort of physical labor. White color job कोई अच्छा सा काम, प्रोफेशनल पेशावराना काम. तो नंबर 2 का जो बी है, dear students, he was wearing a pink shirt with a white collar. तो उसने जो शर्ट पहनी, he was wearing a pink shirt with a white color, उसका शर्ट का कलर पिंक था और इसका कॉलर जो है वो वाइट था. यानी कि कॉलर, शर्ट का कॉलर जो है वो वाइट था, तो उस शर्ट का कलर पिंक था और जो उसका कॉलर था वो वाइट. तो सेकंड मीन्स हियर वाइट कलर, अ शर्ट विद वाइट कॉलर, यानी कि शर्ट का कॉलर का जो रंग है वो वाइट है. तो इन फर्स्ट वाइट कलर जॉब मीन्स अ डिसेंट जॉब, a professional job where a man does not need physical labor. And in second, he was wearing a shirt with a white color. In second, the white color refers to the color, a shirt, the color of which is white, the color of which is white. And in third sentence, it is first part, we live in a dash near the mosque. We live in a dash near the mosque. We live in a dash near the mosque. We live in a white house near the mosque. We live in a white house near the mosque. We live in a white house. White house. White house here means a house which is white in color. A house which is white in color. We live in sentence third. Sorry, it is here white collar jobs and it is here white collar. And in sentence third part A, third point, and it is part A, we live in the dash near the mosque. We live in the white house. We live in the white house near the mosque. हम मस्जिद के नजदीक जिस घर में रह रहे हैं उसका कलर, उसका रंग सफेद है. यानी कि white house here means a house which is white in color. And B, the President of America lives in the White House. White House, it is here proper noun, White House. H capital, W capital and H capital. So it is the official residential place of the President of America. सदर मकाम जो है जिसमें अमेरिका का सदर रह रहा है उसको व्हाइट हाउस बोलते हैं. तो फर्स्ट जो व्हाइट हाउस है, इट मीन्स जो मस्जिद के नज़दीक हमारा घर है उसका रंग सफ़ेद है. व्हाइट हाउस इन फर्स्ट मीन्स हाउस विथ व्हाइट कलर. एंड इन द सेकंड पार्ट बी, व्हाइट हाउस मीन्स द ऑफिशियल रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. अमेरिका के सदर का सदर मुकाम जिसमें वो रह रहे हैं उसको व्हाइट हाउस बोलते हैं. तो W कैपिटल H कैपिटल. इन सेंटेंस 4, माई वाइफ कीप्स हर ज्वेलरी इन अ ब्लैक बॉक्स. माई वाइफ कीप्स हर ज्वेलरी इन अ ब्लैक बॉक्स. मेरी जो बीवी है वो अपने जेवरात ब्लैक बॉक्स में रख रही है, काले संदूक में रख रही है. यानी कि एक ब्लैक बॉक्स है, इसमें मेरी वाइफ अपने जेवरात रख रही है. 4A. और इसी का B जो है, द ब्लैक बॉक्स हैज बीन फाउंड. इट विल नाउ बी पॉसिबल टू फाइंड आउट व्हाई द प्लेन क्रैशड. प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन जो ब्लैक बॉक्स हमें मिला, ब्लैक बॉक्स हियर मीन्स फ्लाइट रिकॉर्डर.
फ्लाइट रिकॉर्डर इन अ प्लेन। फ्लाइट रिकॉर्डर एक डिवाइस होती है जिसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, और वो फ्लाइट रिकॉर्ड करता है उसकी। तो ब्लैक बॉक्स जब हाथ आया, जब ब्लैक बॉक्स मिला, तो उससे हमें पता चलेगा कि प्लेन कैसे क्रैश हुआ है, किस तरह ये हादसे का शिकार हुआ है, ये कैसे क्रैश हुआ है। क्योंकि ब्लैक बॉक्स से हमें पता चलेगा, क्योंकि वो एक डिवाइस होती है जो प्लेन में यूज होती है टू रिकॉर्ड द फ्लाइट रिकॉर्डर। इट इज कॉल्ड फ्लाइट रिकॉर्डर। ब्लैक box. And number 5, it is A part. He has a strong hold on his wife. He has a strong hold on his wife. Strong hold, उसकी गिरफ्त अपनी बीवी पे मजबूत है, यानी कि उसकी बीवी उसका हर हुक्म मानती है, उसकी ताबियादारी करती है। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड, उसकी गिरफ्त अपनी बीवी पे मजबूत है। नंबर 5, इसका जो बी है, dear students, it is page number 24. Turn out over the page of your textbook. It is page number 24 now. The southern part of the state is a stronghold of the rebels. Is a stronghold. तो stronghold here means किला। जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट है, वहां वो किला है, डाकुओं का, चोरों का वो किला है, यानी कि वहां पे कसरत में ये डाकू रहजन पाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड मीन्स व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड मीन्स फोर्टिफाइड। फोर्ट मीन्स किला, फोर्टिफाइड इसका साइनोनिम है स्ट्रॉन्ग होल्ड का। यानी कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स है, ये नॉर्दर्न स्टेट जो है, सॉरी, ये जो सदर्न स्टेट्स है, तो वहां ये किला है। किनका किला है? ये चोरों का, डाकुओं का किला है। यानी कि उस तरफ, उस स्टेट के उस हिस्से में काफी डाकू और चोर पाए जाते हैं। तो हियर we filled these blank spaces with the compound words and phrases. Let me repeat. Compound word, it is a combination of two and sometimes more words. It's a combination of two or sometimes more words. And phrase is a group of words that contains a meaning but does not give the complete meaning. It never gives the complete meaning. For example, in a corner, on a table, these are phrases. In a corner, on a table, these are phrases. And there is no time fixation. There is no mention of time in the phrase. When suppose in a corner, it has nothing to do with the time. On a table, it has nothing to do with the time. So, dear students, today on 16th April, we completed the 20 exercise of 23 and 24 page number, where we filled the blank spaces with the compound words and the phrases. It is all for today. By tomorrow, inshallah, we will talk about the adjectives and gerunds. Okay. Thank you to all.